Connection timed out. Start. Finally. Connection timed out. Okay, let's check if it is working. Yeah, okay, good. I was wondering कि आज चलेगा कि नहीं चलेगा. कभी कभी कोई गारंटी नहीं होता टेक्नोलॉजी पे जो हम इतना डिपेंड करते हैं. Correct. Okay, good evening everyone. आज थोड़े हम जल्दी सेशन कर रहे हैं. हम लोग जनरली 7 बजे करते हैं, पर फिर होते होते बहुत लंबा खिंच जाता है, सबको लेट हो जाता है. तो टुडे आई एम ट्राइंग टू डू इट टू एन अर्लियर स्लॉट. So today we have Aman Shukla with us. He's a technical officer of National Coalition of People Living with HIV in India. Thank you so much, Aman, for doing this. Really appreciate it. हम लोग कब से प्लान कर रहे हैं actually. हो नहीं रहा था हम लोगों का डेट फिक्स, but thank you so much for helping and guiding us all कि HIV क्या होता है, और आप एक presentation भी देंगे हमको. So welcome. Thank you so much, Rachna ma'am, for inviting me here. हाँ, HIV का तो ये टॉपिक है, बहुत ही लोग टैबू समझते हैं इंडिया में, in foreign countries also. Okay, so I will introduce myself. I am Aman Shukla. I am based in Delhi, India, and I am a technical officer in National Coalition of People Living with HIV in India. I look after 6 states in India, which includes Delhi, Punjab, Haryana, Uttarakhand, Jammu Kashmir, and Himachal Pradesh. Okay. These are northern states that I look after, and I provide my technical assistance to them. Okay, okay. So how did you get into this? ये बताओ कि तुम्हारा करियर इधर कैसे स्टार्ट हुआ? Okay, so initially I want to start. मैं starting से बताता हूँ आपको. When I was in college, okay, so we had this subject called NCC, National Cop Cadet, Okay. and one is there, one NSS, National Social Work, or National Social Service. So I enrolled myself to National Social Service. Okay. In that, I think somebody is waiting. Yeah. I'll just look at it. हाँ, बोलिए. हाँ. तो जब ये NSS में मैंने अपने आप को एनरोल किया कॉलेज टाइमिंग में, तो वहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स है that our people are struggling to get into that. Like there were many topics on health, on gender, on equality, on human rights, है ना, and civil rights. Right. बहुत सारे चीजें थे जिसमें था ये. Okay. तो ये सब चीजों में जो चीजें थे, इक्वालिटी, वुमन, ये सब चीज मेरे लिए बहुत कॉमन थी, बिकॉज आई यूज्ड टू स्टडी दिस इन स्कूल आल्सो, कि हाँ बाबा डेमोक्रेसी चाहिए, हर एक का राइट्स होना चाहिए, है ना, और सबका. बट HIV एंड एड्स ये एक ऐसा टॉपिक था जहाँ पे मुझे स्कूल में भी क्लैरिटी नहीं मिली थी. Okay. When I was in school, I didn't have any clarity upon HIV and AIDS. Okay. Where HIV and AIDS, this is a infection where each and everyone should be educated about this. Okay? So that I found it very, very exciting to know more about it. What is HIV? Why people think twice before talking on it? Right. क्यों ऐसा ये है क्या? I was completely blind about this infection. Not blind, but before this, my thinking was like HIV हो गया तो इंसान मर जाएगा. Correct. नहीं, HIV होने से it's just an infection. You can live healthier life after starting your medicines also. So in today's session, I'll show you the basic things that everyone should know about it. Okay. Okay. So let's begin and let's understand more about HIV. I have had a couple of clients, and unfortunately, I think in India, आपको बोलना पड़ता है, राइट, गवर्नमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है एंड फिर मेडिसिन देते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है वो लोग बता नहीं सकते, छुपाना चाहते हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है करके वी शुड नॉट like go and take medication. तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. What are the ways that people can contact you or something like that? There are many challenges
in India when it comes to HIV. Right. We are in 21st century. We have a very big fundings in India, but then too, when it comes to HIV, there is discrimination. Discrimination. There is, this infection can be only for this group people only, and this many things. I will explain you this in detail after this session when you get to know about it thoroughly. Okay, so here I begin with my presentation. First and foremost, what is HIV? So HIV is a human immunodeficiency virus, or a virus, or HIV is a virus that can infect human being. ओके इसका HIV का मतलब अगर मैं देखूं तो इसमें ये HIV का जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ ह्यूमंस को हो सकता है. ओके ये जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको एकदम डाउन कर देता है. ओके itself HIV itself says that human का immunodeficiency वायरस है ये. तो ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम को ये जब डेफिशिएट कर देता है तब वो हमको HIV का जो मात्रा होता है हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई होने लगता है उसमें. Okay. Once it reaches inside the body, it affects human immune system, especially T cell or CD4 cell, which fights infection. HIV damages the cell in immune system and weaken the ability to fight common infections and disease. Okay, so here I want to give you a small brief. Is that जो हमारा CD4 cell होता है ना, हमारा जो एक बॉडी होता है, it's like एक महल है वो. ओके जहाँ पे मैं राजा हूँ और जो मेरा CD4 सेल है वो एक सेनापति है. अच्छा. ओके अगर कहीं दूसरी जगह से अगर कोई आक्रमण मेरे पर करता है ओके तो मेरा एक सेनापति है जो मुझे डिफेंड करेगा. will fight for me, will protect my dynasty, my kingdom. Okay, so this HIV virus directly infects this CD4 cell, which means कि अगर कोई बाहर का आदमी मेरे किंगडम में घुस रहा है तो सबसे पहले वो सोल्जर्स को नहीं मार रहा, सबसे पहले वो सेनापति को मार रहा है. अगर वो सेनापति को अगर वो मार देता है तो मेरा डायनेस्टी जो मेरा किंगडम है वो वीक हो गया. तो इसका मतलब ये है जैसे ही वो HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो वो T सेल और इसको बोलते हैं CD4 सेल, कॉमनली नोन एज CD4 सेल, जिसको वो पूरा फाइट करता है इम्यून सिस्टम से, उसको पूरा वीकन कर देता है और एबिलिटी टू फाइट विद इन्फेक्शंस एंड डिजीज वो बहुत ही कम हो जाता है. जब वो इन्फेक्शन से लड़ने से अगर हमारा CD4 कम हो जाता है तो मुझे अलग अलग बीमारियां लगने शुरू हो जाती हैं. अभी मेरे में अगर इम्यूनिटी सिस्टम में एकदम डाउन है तो अगर अभी के सिनेरियो में अगर मैं देखूं तो मुझे कोरोना वायरस जल्दी हो सकता है और मैं जल्दी से रिकवर भी नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी डैमेज है. तो इसके अलावा जो HIV पीड़ित लोग हैं उनको कौन सी बीमारियां होती है जो बहुत कॉमन पाया जाता है. एक तो ट्यूबरक्लोसिस. अच्छा है. हाँ ट्यूबरक्लोसिस तो HIV में बहुत ही कॉमन है. यू मीन पहले ट्यूबरक्लोसिस होता है फिर HIV होता है कि HIV होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर है इसीलिए TB होता है, करेक्ट? जब मैं HIV पेशेंट हूँ तो मेरा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है. ओके अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन है तो ऑटोमेटिकली जो एयर में जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो इन्फेक्शंस मेरे बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं बिकॉज इम्यूनिटी सिस्टम मेरा लो है, इट कैन नॉट फाइट एनी इन्फेक्शंस. तो जब इन्फेक्शन अंदर वो चला जाता है तो ऑटोमेटिकली मुझे TB हो जाता है. ओके सो देयर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस. एक STI है, VDRL है, देयर आर मेनी इन्फेक्शंस रिलेटेड टू HIV. So that is very deep in things. If I can get one more chance to have a conversation with you, then I will explain that also in detail. When we have time, because now we are on basic things. So I will tell you this. Okay. So HIV का मतलब ये है human immunodeficiency virus. जो human का immunity system deficient कर रहा है उसको HIV बोलते हैं. अभी हम AIDS पे आते हैं. What AIDS stands for? AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. तो अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब ये था HIV हमारे बॉडी में सिर्फ एक सेल को CD4 सेल को सेनापति को एकदम वीकन कर रहा है और वो एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम को एकदम वीक कर रहा है. अभी एड्स में क्या होता है कि मुझे HIV के साथ साथ 2-3 बीमारियां अलग हैं, सिंड्रोम्स.
मुझे एड्स का तब HIV होने के बाद ही वो स्टेज आता है एक एड्स का. दिस इज नॉट अ डिफरेंट डिजीज. HIV एक फर्स्ट स्टेज है और एड्स उसका दूसरा स्टेज है, जिसको आखिरी स्टेज बोलते हैं. देयर आर 1 2 सेकंड लाइन थर्ड लाइन आल्सो, बट अपार्ट फ्रॉम सेकंड लाइन थर्ड लाइन हियर वी हैव एड्स. Okay, it is a late stage of HIV infection and refers to number of potential life-threatening infections and illness that happens when immune system has been severely damaged by HIV virus. वो एड्स हमारे तब बॉडी में तब वो एड्स का स्टेज तब आता है जब हमारे बॉडी का इतना मतलब इम्यूनिटी सिस्टम पूरा डैमेज कर दिया होता है. बॉडी चलने के हालत में नहीं होती, बॉडी कुछ सोचने के हालत में नहीं होती. They are completely bedridden. Okay, right. और बहुत सारी अलग अलग infections, diseases मेरे body में आना शुरू हो जाती हैं. Right. Currently there is no cure for HIV. We cannot cure HIV, but there are very effective drug treatment that enables most people with virus to live long and healthy lives. Right. Okay. ये HIV में से हम लोग ठीक नहीं हो सकते, but हम लोग ये एक दवाई है जिससे हम लोग है ना जितना अभी जी रहे हैं उससे भी अच्छा और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं if we take that medicine on time on a regular basis. Okay. With the early diagnosis and effective treatment, most people with HIV will not develop an AIDS-related illness and can live a near normal lifespan. I told you right कि अगर HIV होता है तो हमको डरने की जरूरत नहीं है. क्योर नहीं है तो क्या हुआ? But we can live a normal lifespan, right? It's just one tablet that you have to take each and every day on a regular basis. Right. But you can live life. So, अभी ये HIV का वायरस, HIV के बारे में हम जान लिए कि वो इम्यूनिटी सिस्टम डाउन कर देता है, वो HIV होता है ना, एक वायरस होता है. एड्स जो हमारे बॉडी को पूरा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा डैमेज कर देता है और अलग अलग डिजीजेस जब होने लगती है तो एड्स का स्टेज आ जाता है. अब मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये मेरे बॉडी के अंदर ये HIV आ कैसे रहा है? So there are only 4 main reasons, mode of transmission that HIV can enter into a human body. Right. Okay, ये 4 रीजन के अलावा कोई भी 5वां रीजन नहीं है. Okay, unprotected sex with HIV infected person. If you are having unprotected sex with a person who is having HIV, okay, with a person who is having HIV and we are having unprotected sex with them, then we can have HIV transmission. Okay, it's not that कि अगर मैं negative हूँ और my partner is negative, then we cannot have HIV transmission. Okay, but if I am HIV positive and my partner is HIV negative, then from my body he can get or she can get the HIV virus. Okay, this is the first reason where you can get HIV, which is unprotected sex with an HIV infected person. Second reason is transfusion of HIV infected blood or blood products. Right. अभी इसमें क्या होता है कि अक्सर जब हम लोग एक्सीडेंट होता है हमारा या फिर हमारे बॉडी में ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इमरजेंसी के बेसिस पे डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कहीं से ब्लड लेकर आओ, इनको ब्लड चढ़ाओ. ओके, तो वो टाइम पे जब अच्छे से प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं हुआ होता है वो ब्लड और हमारे बॉडी के अंदर वो ट्रांसफ्यूजन कर दिया होता है वो ब्लड का, HIV ब्लड का, तो हमारे अंदर वो HIV आ सकता है. So it is very necessary that we should examine the blood which we are entering into our body. Okay, this is the second reason. First reason is unprotected sex. Second reason is transfusion of HIV infected blood. Okay. Now this is a third reason, very important reason. आजकल के जनरेशन में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है. इंडिया में इसका बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जो लोगों का HIV हो रहा है. Sharing of needles, injury with needles contaminated with HIV infected blood. Okay, so इसमें क्या होता है, इसमें 2 तरीके की चीज आ सकती है. एक तो एक हॉस्पिटल बेसिस पे होता है फैसिलिटीज में, जहां पर अगर मैंने अपना मैं पॉजिटिव हूँ, हम HIV पॉजिटिव, अगर मैंने अपने बॉडी में मैंने ब्लड टेस्ट किया आज, अभी वही इंजेक्शन अगर डॉक्टर ने अगर आपके बॉडी में इंजेक्ट किया, ब्लड चेक करने के लिए लिया, तो आपको उससे HIV हो सकता है. This is the first reason where this happens in medical facility.
Okay, and the second reason is IDU. IDU means people who inject drug. Okay. Intravenous of drug users. हाँ, needle sharing होता है ना, पार्टी वार्टी में जाते हैं हम लोग, क्लब वगैरह जाते हैं, मस्त अच्छे से लगा लिया, एंड देन ए लो भाई तुम भी लगाओ. तो अगर मेरे बॉडी में HIV है तो वो ब्लड नीडल के थ्रू उसके बॉडी में भी जा सकता है. So the first reason is unprotected sex with HIV infected person. Second reason is transmission of HIV blood, HIV infected blood. Third reason is sharing of needle, and the fourth reason is mother to child. Okay, from HIV infected mother to her baby during pregnancy, during birth, or during or after delivery through breast milk. अभी इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी मम्मी अगर HIV पॉजिटिव है ना, और शी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑन अ रेगुलर बेसिस, शी इज मिसिंग हर मेडिसिन, और शी हैव नॉट स्टार्टेड ओनली मेडिसिन, देन when she is giving deliveries, or she is pregnant, then her child there is the chances that her child can infect with the HIV. Right. ओके, अभी तो बहुत ही इंडिया में तो ऐसा सिनेरियो हो गया है कि बहुत सारे फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट फैसिलिटी में तो ये मैंडेटरी है कि व्हेन एन प्रेग्नेंट वुमन इज विजिटिंग योर क्लिनिक, गायनेकोलॉजिस्ट हैज टू चेक हर HIV स्टेटस विथ हर कंसेंट. ओके, बिकॉज अगर मैं HIV से जी रहा हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं टेस्ट नहीं करा रहा हूँ, और टेस्ट कराने के बाद मेरे को मालूम पड़ा मेरा HIV है, I can stop that HIV transmission from mother to child. Right. So here there is a chances where mother can transmit HIV virus to her child while giving deliveries during her pregnancy. Okay. अभी सबसे बहुत सारे इंडिया में ये बहुत सारी माँ जो है अपने बच्चों को HIV इन्फेक्शन नहीं देना चाहती हैं, वो दवाई एकदम रेगुलर बेसिस पे ले रही हैं, while delivery she is unable to transmit the HIV virus, but जब बच्चा रोता है तो मम्मी को पता नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, माँ अपना ब्रेस्ट का दूध पिला दिया. अभी ब्रेस्ट का दूध पिलाने से बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट है. पर वो माँ को obviously पार्टनर से, I mean I'm guessing कि पार्टनर से ही जनरली आया होगा, right? हाँ. It can be anything, no ma'am. It can be what if my mother is FSW, female sex worker? Right. What if my mother is female drug user? My mother is single mother, single parent. It can be any scenario. We are not judging upon her past. We just know it's a virus and it should not transmit. Okay, got it. We are just focused on health. We are not into judgmental things. She must have done this, because of this she have got this disease. Right. She have got this infection. No, each and every human have the right to do whatever they want, whatever they like. Okay, so completely fine if the single mother, single parent, wherever she have got this disease infection from. Okay, so there are two transmission. One is unprotected sex with HIV infected person. Second is transmission of HIV infected blood. Third is sharing of needle. Fourth is mother to child. Okay, got it. This is the mode of transmission. इसके अलावा अपने साइंस ने इतना तरक्की किया नहीं है और ऐसा कोई ट्रांसमिशन है ही नहीं जहाँ पे हमको HIV ट्रांसमिट हो सके. Okay. Who is at risk? Anyone can get HIV. It's not that female sex worker है तो उसको HIV, इसके लिए उसको HIV. Sharing of needle. Okay. हेलो. हाँ, सुनाइए. हाँ, बोलिए. हाँ, कोई बोल रहे थे? नहीं, वो एको हो रहा था, अचानक अनपॉज हुआ है वीडियो वहाँ पे. हाँ, बोलिए. हाँ. तो who is at risk? मतलब ये लोगों का ऐसा assumption है कि अगर वो ट्रांसजेंडर है, वो सेक्स वर्क कर रही है, इसकी वजह से उसको HIV हुआ रहेगा. वो फीमेल सेक्स वर्कर है, वो सेक्स वर्क करती है, इसके वजह से उसको HIV हुआ रहेगा.
इट्स नॉट दैट कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर इंसान को ही एचआईवी हो रहा है। पर चांसेस वहां पे ज्यादा नहीं है। ज्यादा है, हाँ, चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, लेकिन कंसेप्शन, लोगों का कंसेप्शन क्या है कि अगर मुझे ट्रांसजेंडर को देख रहा हूँ, अरे उसको एचआईवी होगा, मैं अगर उसको फीमेल सेक्स वर्कर को देख रहा हूँ, उसको एचआईवी होगा, उसकी मम्मी को एचआईवी है, उसके बेटे को एचआईवी होगा। बट दिस इज नॉट द वे टू गेट जजमेंटल। हियर एचआईवी कैन बी इन्फेक्टेड टू एनीवन। एचआईवी किसी को भी हो सकता है, वो भले लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, या फिर मिडिल एज के लोग हो, कोई भी इंसान है तो एचआईवी हो सकता है। Okay, if exposed to a probable mode of transmission, however, some people have higher risk due to behavior of practice. This includes people engaging in anal or vaginal sex, either respective of penetrative with multiple partners without condom or with inconsistent use of condom. As you said, कि उनका चांसेस बहुत ज्यादा होता है. Here is the reason कि वो लोग सेक्स वर्क में हैं, तो engaging on in anal or vaginal sex is more in their group. Right. So this is the one reason. जब हम condom use नहीं करते तो ये transmit हो सकता है. Second reason is with injecting drug use where needle and syringe are shared. Okay. If we both are going, we are going to at a party where there are people are having drug and उन्होंने बोला कि ये लो, इससे बहुत अच्छा नशा होगा, you will get a good kick, आप ले लो, मजा आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एंड आप क्या करते हो, वो इंजेक्शन लिए और अपने में इंजेक्ट कर लिया. ओके. तो आपको एचआईवी हो सकता है. तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर अभी ये जो है विद इंजेक्शन ड्रग यूज वेयर नीडल एंड सिरिंज आर शेयर्ड. अभी आप तो कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं ना, मैं कोई कैटेगरी में आता हूँ, तो हमको एचआईवी कैसे हो गया? बिकॉज वी हैव टेकन दैट इंजेक्शन which is infected already. So third one is with any sexual transmitted infection. कोई भी sexual activity हम लोग करेंगे without protection, then we can get that infection. Engaging in transactional sex or sex relished under the influence of alcohol or recreational drug as a habit where they are unable to negotiate condom use during intercourse with person of unknown HIV status. अक्सर हम लोग मूवीज में देखे हैं कि नशे के हालत में उनके साथ विदाउट प्रोटेक्शन HIV हो गया. लोग जो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत उन लोग सेंसेस में नहीं रहते हैं और वो सेक्स कर लेते हैं विदाउट यूज ऑफ कॉन्डम, तो वो एक सिनेरियो है, वो एक बिहेवियर है जहाँ पे HIV ट्रांसमिट हो सकता है. ओके. Having HIV positive partner who is on ART, not virally suppressed, not adherent at ART. अभी ये जो टर्म है लास्ट मैंने जो बताया, not on ART, not on virally suppressed, ये जो तीन चीजें हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ. ठीक है. ओके, चलो मैं यही बता सकता हूँ. नॉट ऑन ART मतलब ये ART एक क्लिनिक का नाम है जहाँ पे HIV की दवाई मिलती है. इसका फुल फॉर्म होता है एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी और ट्रीटमेंट. ओके. ये एक जगह है जहाँ पर हमको HIV की हर दवाई मिलती है. नॉट वायरली सप्रेस्ड, अगर जैसे कि हमने पहले स्लाइड में पढ़ा कि HIV एक वायरस है, तो हमारे पूरे बॉडी में HIV का जो वायरस है वो हर एक सेकेंड, हर एक मिनट मल्टीप्लाई होता रहता है. तो हमारे बॉडी में यूं अंदर समाता है कि पूरा इम्यूनिटी सिस्टम पूरा डैमेज कर देता है. और नॉट अडियरेंट एट ART. दवाई शुरू है लेकिन आप दवाई नहीं ले रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है ना. इट्स नॉट ओनली दैट कि वी आर ऑन ART, नाउ हाउ वी कैन गेट HIV. अरे you have to take that medicine on a regular basis, each and every day on the same time. You cannot miss a day, not even a time. If you have started today at 5 o'clock, you will take the medicine. Tomorrow also, you have to take that medicine at 5 o'clock only. This is mandatory to, live a healthy and longer lifespan.
तो ऐसा ये हु इज एट रिस्क, यहाँ पे लास्ट का इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर मेरा पार्टनर अगर पॉजिटिव है मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकता. आई कैन, बट ही शुड बी ऑन ART, वायरली सप्रेस्ड, अडेयरिंग टू ART. इसका मतलब होता है कि वो अच्छी सी दवाई ART पे होना चाहिए, उसका वायरल लोड जो है बॉडी में 0 होना चाहिए, और अडियरेंस उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए. In that case, we cannot transmit HIV with unprotected sex also. Okay. This is there are chances you can transmit HIV. That is why I have added this into a risk. I'm into a risk because my partner is HIV positive, or I am positive, my partner is in risk. है ना. अगर मैं कभी एक महीना दवाई नहीं लूंगा और उसको बताऊंगा नहीं, तो he is in risk. After 3 or 6 months, he will get to know that he's also HIV positive. So he is on risk. Correct. Having HIV positive partner is a risk. So that is why I've added this. Who is at risk? HIV किसको किसको हो सकता है, कहाँ पे रिस्क आ सकता है. तो रिस्क अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है, नेडल शीथिंग से हो सकता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स अननोन पीपल जिसका HIV स्टेटस हमको मालूम नहीं उससे हो सकता है, और पार्टनर जिसको HIV है उससे हो सकता है. So always whenever you are having sex, please use condom. Protected sex is must. Safe sex. Sex is good. Safe sex is the motto. So the next slide is about not a route of transmission. People say अभी मुझे HIV है. People say अरे हम लोग अगर सेम टॉयलेट यूज करेंगे तो मुझे तो नहीं हो जाएगा HIV. मैं एक रूम में उसके साथ रह रहा हूँ. आई एम लिविंग इन PG. अगर मस्कीटो वहां पे काट रहा है, मुझे काटा आके वही मस्कीटो, मुझे तो नहीं हो जाएगा HIV. दिस ऑल आर बुलशिट. This all are bullshit. Okay, there are only 4 mode of transmission that I told you in earlier slide, which is unprotected sex, needle syringe, mother to child, and blood transfusion. इसके अलावा कहीं से भी HIV अपने बॉडी में नहीं घुस सकता. So here is the route, not a route of transmission. यहाँ से नहीं आ सकता. क्या है वो? By mosquito, ticks, or other insects. Through saliva, tears, or sweat. किसी मैं अगर HIV positive हूँ, for to take me as a I'm a HIV positive person taking this session. अगर मैं किसी से किस भी करता हूँ लिप टू लिप, अगर मैं किसी का आंसू भी पोंछता हूँ, या फिर मैं किसी का स्वेट भी अगर मुझे लग जाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे भी उससे HIV हो सकता है. Okay. सलाइवा से, आंख के आंसू से, या फिर पसीने से, ये इससे HIV स्प्रेड नहीं होता. Okay. यहाँ पर particularly लिखा है close mouth और social kissing. So I think social kissing means कि जहाँ पे ऐसे चीक पे करते हैं, correct? हाँ. यहाँ पे saliva भी लिखा है. तो are you saying अगर से French kiss या proper kiss करोगे तभी भी नहीं होगा? नहीं. Oh, अच्छा, तो it has to be via your blood or sperm or something. Blood, sperm, हाँ, ऐसा है. Got it. तो सलाइवा एक्सचेंज होता है तभी भी नहीं होता. तो इतना डरने की जरूरत नहीं है लोगों को. लोग HIV इन्फेक्टेड इंसान को ऐसा पकड़ लेते जैसे कि ओ माय गॉड, अब दिस इज माय लास्ट डे ऑफ माय डे, लास्ट डे ऑफ माय लाइफ. Right. Okay, here is hugging, shaking hands, sharing toilets, sharing dishes, or closed mouth or social kissing with someone who has HIV. Okay. इससे भी HIV नहीं होता. Oh. I am working with the people who are living with HIV, for people who are living HIV, by the people who are living with HIV. In my organization, I will if I would have got the approval from my organization, I would have given that slide also, that what my organization says. But unfortunately, says about what exactly? Yeah. So that is, chalo, ठीक है. Next time, whenever we are having a session again, sure. Hoping to that we have it again. Okay. So, hugging से, shaking hands से, sharing toilet, sharing dishes से नहीं होता. And through other sexual activities that don't involve the exchange of blood or body fluid, for example, touching.
है ना, टचिंग से वगैरह नहीं होता, Okay. कुछ नहीं होता. Okay, it should enter into your body. The mode of transmission. That is the only for mode of transmission where you can. Okay. Okay. Right. Like syringe and all that you had said. हाँ. So prevention. How to prevent from HIV? Right. Okay. Use condom correctly and consistently every time for anal or vaginal sex. If using a lubricant, it should be water-based. Okay. Oil-based lubricant can weaken the condoms and cause them to break. Right. Okay. So this is a very, very, very important thing, because whenever we are having sex, people are like, saliva se ho gaya, oil se ho gaya. No. Please, if sex is good, then please practice safely. Okay. Use condom correctly and consistently on every time whenever you're having sex. And used lubricant should be based on water. Durex ka aata hai. There are many brands. I don't remember the name of the brand, but next time I will definitely put the brands also. So this is the way where we can prevent HIV. Okay. The second way, use of pre-exposure prophylaxis, which is called as PrEP, can reduce HIV infection in people who are at very high risk. PrEP can reduce risk of getting HIV from sex by more than 90% and from injection drug use by more than 70%. So what is this? Is this a medicine or is it an injection? What is it? It is a medicine. Oh. So there is PP and there is PrEP. One is PEP, one is PrEP. So PEP is what? Post-exposure prophylaxis, pre-exposure prophylaxis. These are the two things. Okay. Mostly people who are, today I had a sex with someone, and later on I got to know that he's HIV infected and we had unprotected sex. What shall I do? Now I'm in danger. So in 48 hours or in 72 hours, I have to enroll myself to ART center and then get this PrEP to avoid the infection. But PrEP is pre-exposure, right? Then you said there's one with post-exposure. It's almost like the eye pill, right? कि कर लिया बाद में एक कुछ करना है तुमको. हमको है ना पहले से प्रिवेंट करने के लिए है. People mostly take it PEP when they are at high risk. People who are in sex work, people who are in working in labs, they take PrEP and PEP. So mostly people who uses post-exposure. Okay. If I'm more involved in sex, I don't know when I will get the sex to do, when I'm active. So it's better that we use pre-exposure prophylaxis. है ना, हम लोग अगर पहले से अगर pre-exposure लेके रखेंगे और उस पे हैं तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे. पर हम सब रेगुलर लोगों को तो नहीं लेना. The people who are active. If you are active, okay, sexually active. If you are sexually active, then आप ये कितने बार लेना पड़ता है? लाइक साल में एक बार? 28 days लेना पड़ता है if you are active. हाँ, on time. ये है ना every day. अगर आज आपने सोचा है कि मैं खाना खाने के बाद 10 बजे लूंगी ये मेडिसिन है कि इंजेक्शन है? मेडिसिन है ये. ओ मेडिसिन है, मुझे लगा इंजेक्शन. नहीं, एक टैबलेट आता है वो खाना है. एक टैबलेट आता है वो खाना है, 10 खाना खाने के बाद वो खाना है, और वो 10 बजे का टाइम जो है आपको 28 days. Is this post or pre-sex? This is pre-sex. तो 28 days before you have sex रोज लेते रहो बस. अगर से तुम you are in danger of getting HIV. Pre-sex है ना, pre-sex is not only that sex के लिए ही है. There are many other things also. हम लोग को पता है, हम लोग ऐसे जोन में काम करते हैं जहाँ पर हम लोग अगर निडल प्रिक हो गया, people in labs, when they there is called viral load testing. ठीक है, वायरल लोड टेस्टिंग देखने के लिए बॉडी में कि वायरस कितना है, HIV का वायरस, तो वो लोग प्रेप लेके रखते हैं. या फिर अगर एक्सपोज हो गए तो पोस्ट. पीपल मेनली यूज पोस्ट एक्सपोजर ओनली because after exposure only they are very oh god
हाँ. अभी मैं हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं गया पोस्ट एक्सपोजर कितने दिन के लिए लेते हैं दोनों दवाई? 28 days. ओह वाओ. और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स तो हैं, साइड नौजिया तो होता होगा यार. साइड इफेक्ट्स तो नहीं मैं बोल सकता, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मेडिकल फील्ड इतना ग्रो कर रहा है कि अभी वो भी नहीं है ना, बहुत ही नॉमिनल है, जैसे कि यू नो नौजिया तो होता होगा. nausea used to happen before in अच्छा. TLE. अच्छा. Now that drug regimen has been upgraded, Okay. TLE से निकाल के D डाल दिया है, डेलोग्राफर. तो Okay. नॉर्जिया वगैरह सब अभी कम हो गया है. अभी अगर होता है तो चक्कर जैसा आता है, गिडीनेस होता है, ये सब चीजें होता है. Okay. Got it. Okay. People who use needle to inject drug, जो लोग needle यूज करते हैं वो should ensure use of sterile needle and should not share it with anyone. This is a prevention. अगर तुम if we are not saying that stop you having drugs, stop And I injecting. am saying na, stop having drugs. I mean, stop doing drugs. Excuse me. नहीं, I am saying it. बच्चा लोग, please don't go that shit way. ये कोकिंग शोकिंग करने में जिंदगी तो बर्बाद करोगे, ऊपर से HIV हो जाएगा. क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? एक लाइफ के लिए प्लीज. नहीं मैम, यहाँ पे कैसा होता है, ये हम लोग हार्म रिडक्शन पे काम कर रहे हैं. हमारा मोटो ये है, ये जो हार्म है वो रिडक्शन करना है वहीं पे हमको. ये हार्म को ट्रांसमिशन नहीं देना है. 1 से 5 लोग को देने से अच्छा है कि एक को उससे स्टॉप करूं और वहीं पे मैं काम करूं उनके इस पर. अगर ये ड्रग यूजर है तो हमारे पास एक कंपोनेंट है विच इज कॉल्ड एज OST. ये भी एक ड्रग है, बट वो धीरे धीरे करके इंसान को नशा मुक्त करवा देता है. ये नशा मुक्त केंद्र नहीं है, ये नशा मुक्त की लिए नहीं है, बट वो एक ऐसा है जहाँ पे हार्म रिडक्शन होता है. और यूजुअली वी सी दैट पीपल आर टेंड टू लीव दैट ड्रग. तो मैं भी अगर कुछ बोलना है इस प्लेटफॉर्म पे तो यही बोलूंगा कि आप अगर इंजेक्ट कर रहे हो तो प्लीज किसी के साथ शेयर मत करो. My motto is to not to share. Don't spread the infection to your friends or family or anyone belonging partners. तो अगर ये harm reduction नहीं होगा तो ये और लोगों को मल्टीप्लाई होगा ऐसा. So for pregnant women, prevention क्या हो सकता है? HIV testing and treatment is if diagnosed. Okay. Reduce the reduce the risk of transmission of HIV to baby. जैसे अगर हमको प्रेगनेंसी के टाइम पे मालूम पड़ गया I am HIV infected, तो first start your medicine. Okay. And take it on a regular basis. Because of that, the transmission to mother to child will be decreased. Will not finish, will decreased. But in my cases, since I'm working here since 5 to 4 years now, but अभी तक मैंने जितना भी ट्रीट किया है कि मदर टू चाइल्ड, मदर ने अगर सही टाइम पे डायग्नोस होके दवाई शुरू की है तो वो बच्चे को नहीं हुआ है. That is a very good part that HIV डेवलपमेंट सेक्टर हैव डन कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन स्टॉप हो गया है. इस पे बहुत बड़ी प्रोजेक्ट भी चल रही है. Yes. कैसे स्टॉप हो गया? Because of testing. Mother to child infection. But how did it stop? Like by testing or what particular way? There are 2 modes. Government ने mandate कर दिया है, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं चेकअप करने के लिए जब जाऊंगी क्लिनिक में तो मेरे को क्या करना है, पहले HIV टेस्ट करना है. Okay. सबसे पहले HIV टेस्ट. HIV टेस्ट होगा, फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि ये HIV से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो then and there have to start your ART so that the transmission of HIV to child is decreased. It won't go zero. It will only decrease. I will not say zero. You can say decreased. I will not say zero because नहीं, मैं नहीं बोल सकता उस पे zero, क्योंकि कुछ माताएं क्या करती हैं कि बहुत लीनियंटली ले लेती हैं चीजों को. अच्छा. तो वो बहुत Really? मुझे लगा करके अगर से suppose I was pregnant and I knew I have HIV, I would not even have the child. I would like feel so this thing कि I am jeopardizing a child's life.
क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, सपोज उसको ऑलरेडी HIV हो गया है, तो मतलब ऑब्वियसली जैसे आपने बोला है ना कि उनकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हाँ, तो कुछ भी इलनेस जल्दी उन लोग बीमार पड़ेंगे बच्चे, correct, राइट? correct. So that would be so sad. So I hope parents would be little more careful rather than just like कर लिया, बच्चे पैदा कर ये लिए. सही बात है. Yeah. I agree with you, but there are many parents that they take care of this and वहाँ पे से HIV transmit नहीं हुआ है. There are many. I can't give you the number, but there are many. Oh, that's good. That's good. क्योंकि सपोज नहीं कम होता, लेट्स से कि कम नहीं हुआ और हो गया बच्चे को, लेट्स से कि हो गया. Can you imagine that child all his life will be taking that medication, right? उसको HIV हुआ है. You know, Rachna ma'am, there are many child. When I used to work in Mumbai, I was based in ART center. ART center. Now I'm working on a national level. But when I started my career, I was deployed in one ART center where I used to see small children, 4 days, 5 days babies who, they used to say कि कैसा होता है बच्चे लोगों में भी HIV का जो टेस्टिंग है ना, बहुत 18 मंथ के बाद होता है. ओके. एक टेस्ट होता है जो 6 महीने बाद होता है, एक टेस्ट होता है 18 मंथ टू कंफर्म whether this child has HIV or not. So that is the problem that we mothers should take care of that. Right. Agreed. Yes, mothers should take care of that and should not think that नहीं कुछ नहीं होगा करके. Right. Correct. This is the thing. So the next is knowing HIV status through HIV test and initiating treatment as soon as possible if diagnosed positive. Reduce the risk of transmission to another person. This is the very golden point for us. जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको HIV है, you don't have to think anything, no second choice, no nothing. Just start your treatment and reduce the risk of transmission of HIV to another person and live long and healthy life. Correct. Okay. Sign and symptoms of HIV. अक्सर होता है कि हम लोग दारू पी लिए, सेक्स कर लिया और हमारे दिमाग में आता नहीं है कि अरे मेरे को HIV था कि नहीं था. किसी का इंजेक्शन लगा लिया, मालूम नहीं पड़ता HIV था कि नहीं था. अगर मैं कोई सर्जरी से जा रहा हूँ और सर्जरी करके वापस घर आता हूँ, तो मैं उसके पहले नेगेटिव था लेकिन उसके बाद पॉजिटिव होने का चांस है क्योंकि ब्लड मेरे में गया है, इंजेक्शन यूज हुआ है, कटलेरीज यूज हुए हैं, है ना. देयर आर चांसेस वहां पर. तो ईच एंड एवरी वन शुड नो दिस सिम्टम्स and each and every one should test themselves for HIV every 6 months. So what are the signs? People can look and feel totally healthy for a long time after they get infected with HIV and might not be aware of their HIV positive status. Very dangerous thing in this is what when I'm infected with HIV, you cannot make out कि मुझे है कि सिम्टम नहीं है. अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, पीपल हु आर वेरी यंग, वेरी यंग एट द एज ऑफ 18, 15, 21, 25, उनका तो अगर इन्फेक्शन अगर ट्रांसमिट हुआ ना तो बहुत ही लेट डिटेक्शन आता है, बहुत ही लेट सिम्टम्स आते हैं, बहुत लेट सिम्टम्स आते हैं क्योंकि दे आर वेरी यंग, दे हैव अ वेरी गुड इम्यूनिटी सिस्टम, सो द सिम्टम्स है बहुत लेट अराइज होते हैं. ओके. इसके लिए हर 6 महीने में टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. एंड माइट इट कैन टेक 10 years or more for HIV to show any symptoms. Okay. Can you believe? अगर मैं आज HIV से ट्रांसमिट हुआ मेरा इन्फेक्शन, आफ्टर 10 years, आफ्टर 5 years, 4 years, 1 year, मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरे में सिम्टम्स है, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं. This is all because I have a very good immunity system. Okay. Sign and symptoms of HIV, when they appear, are generally result of other infection that attack body due to weak immune system. Okay, it may include flu like syndrome, fever, weight loss, diarrhea, etc. Vary from person to person. It depends upon person to person how it is. Like if I have a very good immunity system, then I might get a fever, है ना, धीरे धीरे वेट लॉस हो रहा है, डायरिया हो रहा है, बट मैं बोला फीवर हो रहा है मैं दवाई खा लूंगा, क्रोसिन ले लिया, डोलो ले लिया, उससे कुछ नहीं होगा. You have to get yourself tested every 6 months.
to prevent yourself from HIV. And if you are infected, then start your ART on time to live long and healthy life so that you don't get any other diseases before it's too late to control that HIV virus. Right. So the common symptoms are fever, weight loss, diarrhea. Sometimes you get this छाला को क्या बोलते हैं, mouth ulcers, mouth ulcers सब हो सकता है, like blisters जो mouth में होता है. हाँ, वो यहाँ पे होता है, तो वो एक symptom है. The only reliable way to know if someone has HIV infection or not is through HIV testing. Okay. If I'm living with HIV since if I'm born with HIV, I might look healthy, but I'm living with HIV. You can't even judge or even have a judgment कि अरे नहीं ये HIV का होगा, ये HIV positive है, नहीं. How can you make out that if he was HIV positive or not? He's very thin. अरे he is very thin means I'm also very thin. I'm HIV positive क्या? I'm having a very good health, but I am HIV positive. There are many things. You cannot judge them through their physical appearances and behavior. Right. Everyone, especially those who had unprotected sex or share needles, should get tested regularly for HIV. जो भी मतलब आज हमको पता नहीं आज मैंने किससे सेक्स किया या फिर इससे सेक्स अगर किसी नोन से कर भी रहा हूँ, वो किसी और के पास है, मैं किसी और के पास हूँ, one day we come together, maybe हम दोनों से HIV नहीं मिला होगा, but किसी और से आया होगा. तो people who are very active in sexual activities or they are sharing needles, they should get tested every 6 months. Right. Early diagnosis and early treatment can help a person to stay healthy life. And it also decreases risk of transmission to others. Right. It is very important. These points I have बहुत ही खुद का डाला है मैंने. So very important points to HIV testing. कहाँ होता है? People will say यार HIV testing अगर मैं हर 6 महीने में करूँ, जाऊँ कहाँ? This is the Indian scenario, but I don't know about your place. Right. Right. So the Indian scenario is HIV testing for HIV is widely available at government hospital, private clinics, and private labs. Is it in India? No, not in private labs and not private, of course. Yeah. In India, each and every government hospital has HIV testing center. It's called Integrated Counselling and Testing Center, ICTC. Okay. So it's full of free cost, zero cost. But in private hospital and labs, they might cost you. But in India, there are many government hospitals in every district, in every state level, district level. We have hospitals. In Delhi, there are in areas. There's so many places that we have HIV testing centers. Okay. Followed in required before HIV testing. Informed consent from the person being tested. HIV test आपके consent के बिना कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता. Without consent, he cannot test you HIV testing. Without consent हो ही नहीं सकता. Counseling by trained counselor or doctor. ये जो HIV टेस्टिंग में है ना, जब हम टेस्टिंग कराने जाते हैं HIV का, तो पहले प्री टेस्ट काउंसलिंग होता है और टेस्टिंग के बाद एक पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी होता है. ताकि वो फ्री कॉस्ट ना करे. Yes, that is free of cost and this usually happens in government hospitals only. So जो काउंसलिंग है वो कोई भी ट्रेंड काउंसलर या डॉक्टर के पास से ही होना चाहिए. प्री टेस्ट काउंसलिंग एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग. Okay. Commonly, rapid tests are done to diagnose HIV using blood as sample. These are done by trained healthcare providers. अच्छा. आपने इंडिया में कैसा होता है? There are very small projects are running in India in guidance of NACO, National AIDS Control Society. Control Organization, who runs such small projects in India.
Okay. ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे रूरल एरियाज है, अनटच्ड सिटीज, अनटच्ड एरियाज, जहाँ पे हॉस्पिटल मीट नहीं कर पा रही, जहाँ पे वो लोग नहीं जा पा रहे, तो वहां पर हम लोग कैंप्स लगाते हैं. ओके. हाँ, तो ये कैंप्स अभी कैसा होता है, ये रैपिड टेस्ट वाला कैंप होता है. लाइक हाउ यू हैव दिस PCR एंटीजन रैपिड टेस्ट जो होता है. हाँ हाँ, नहीं, कोविड के लिए. एंटीजन रैपिड टेस्ट वो कोविड के लिए है. ये हाँ. वैसे ही ये है रैपिड टेस्ट, HIV के लिए. बट इसमें एक ड्रॉप ब्लड का जाता है. अच्छा, एक ड्रॉप से. एक ड्रॉप. जैसे वो डायबिटीज का टेस्ट होता है. करेक्ट करेक्ट, वैसा ही किट What होता है. is, but is it like reliable ये वाले टेस्ट जो? It's reliable but not confirmatory. अच्छा, okay. There are difference between reactive and positive, non-reactive and negative. Okay. Okay, in rapid test in that kit, no, you will get the result of reactive, but not positive. You have to get that confirmed in the confirmatory center only. I told you, like ICTC center. In there, they take your blood 3 times and they test in 3 different kits. Yes. It's just only to be so 100% sure. Sure, yes. It's just to be sure 100%. And second, they test that blood sample into 3 different this kits. Okay. One is NAT, CNAT, and there are different testing kits. They confirm and then they give you the this paper of confirmatory whether you are positive or negative. Okay. बट ये जो टेस्ट तुम बोल रहे हो, जो रैपिड टेस्ट होता है, वो कोई भी खरीद सकता है, जैसे हम एंटीजन रैपिड खरीदते हैं, कि दिस इज स्पेसिफिकली ओके प्रिस्क्रिप्शन चाहिए? इन इंडिया you can buy without prescription also. Yes. Okay. HIV test can be done by anyone, whomever, wherever. This is a new project. From this year only we have started this. Okay. In India, the rapid test. But only the rapid test one. हाँ. और बहुत महंगा होता है कि ये फ्री मिलता है? नहीं, इतना महंगा नहीं होता है ये, but it's better not to visit your nearby government hospital. Right. It's better. Right, agree. It's better than testing 10 times. It's better than go hospital, government hospital. They just do it free of cost है. आपको करवाना है और फिर जाना है. Right. Rapid test is for the people who are who are not willing to come to the hospital, who are very far from the hospital, who does not have the money to commute. Right. It's for them. Okay. Usually this is used for in ground only, field work only, where IDU people who inject drug, they are not willing to come to the hospital, but we know that they should get tested for their health purpose. We take this testing. Okay. Recently, self-tests are also available. These are the screening tests and need further testing for confirmation if positive for HIV. Okay. Last time मैंने ऐड किया, मेरे को लगा मैंने ऐड नहीं किया होगा. Recently, self-tests are also available. These are the screening tests and need further testing for confirmation if positive for HIV. अगर स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव रिएक्टिव आया तो आपको कंफर्मेशन के लिए हॉस्पिटल विजिट करना ही है. नेक्स्ट इज विंडो पीरियड. नाउ यू विल थिंक व्हाट इज विंडो पीरियड, व्हाट इज दिस? न्यू थिंग्स टू नो. I love learning new things, so yeah, that excites me. Okay, now this what is window period? Like today if I have infected HIV, today if I had a sex with an infected person, और मैं ऑटोमेटिक आज ही मैंने सेक्स किया उसके साथ और आज ही जाके मैंने टेस्ट करवा लिया, आई विल कम. हाँ, पता ही नहीं चलेगा, राइट? इंक्यूबेशन टाइम कहाँ है? एक वो जो टाइम होता है वो 3 मंथ का टाइम लगता है हमको. ओके, 3 months. वाओ. 3 मंथ का, तो ये आप टेस्ट करवा सकते हो, वो विंडो पीरियड बोलते हैं उसको. ओके. सो टाइम बिटवीन अ पर्सन हैव बीन इन्फेक्टेड विद HIV and when test can diagnose HIV infection is called window period. Okay. This is window period meaning. The window period varies from person to person and depends on the type of test used to detect HIV. Okay. Now I told you, right, for the confirmation of HIV testing, they use 3 kits. There is one kit where you can get yourself tested and know the status within a week or within 2 weeks. That is very, they take your blood and test in a very microbiological centers that happens, and that is very expensive.
Okay. It's very expensive. So on an average, window period is about 3 months. I told you now there's a 3 month after your exposure. Okay, 3 months 3 generally. months. Yes. Okay. Okay. Fear and concern while getting tested. Many people say, अरे अगर मैं HIV पॉजिटिव हो गया तो अगर पॉजिटिव हुआ तो चलो ठीक है मैं दवाई ले लूंगा, बट अगर ये डॉक्टर या काउंसलर ने किसी और को बताया तो अगर उसका वो मेरे बारे में सोचता रहेगा कि अगर ये HIV आया है इसके बॉडी में, मतलब ये कहीं ना कहीं से तो सेक्स किया होगा, गंदा काम किया होगा, ऐसा जजमेंटल बिहेवियर. Right. So positive result with advanced in field of HIV treatment, HIV AIDS is no more a death sentence. Earlier it used to happen कि HIV हो गया तो मतलब इंसान मर गया. अभी वैसा नहीं है. It has transformed to a chronic manageable condition. Now it's a chronic manageable condition. Okay. Though cure of HIV is not available now, safe and robust treatment is available widely, which control HIV and prevents progression of AIDS. Okay. This is a fear. What is confidentiality? All laboratories, clinic and hospitals are bound by law to keep all the data of HIV status confidential. Okay. Information regarding HIV status of a person is not shared with anyone with our his, her, their concerned. Confidentiality के लिए इंडिया में एक लॉ है कि आप अगर शेयर करोगे यू कैन बी बिहाइंड द बार्स. ओके. अच्छा. डॉक्टर्स, क्लिनिक वाले, लैब वाले आपका स्टेटस शेयर नहीं कर सकते. नॉट इवन विथ योर हस्बैंड, विथ योर मदर, फादर, वाइफ, फ्रेंड्स, whoever it is. Until and unless the person is not giving you the consent, you cannot disclose his status. Okay. Yes. Judgmental behavior. Okay. Judgmental behavior. The staff of which. Sorry. ऐसे जजमेंटल होते हैं क्योंकि obviously इतना इंडिया में डर बिठा के रखा है on this matter. That's why, right? Yeah. Very. Judgmental behavior में क्या होता है कि the staff of HIV testing site includes a trained counselor who not only helps a person to understand the aspect related to HIV, but also explains the complete process of testing and ensures comfort. Counselors are trained to provide non-judgmental services. Right. If I'm going for a testing and pre-testing counseling, he thinks अरे sex हुआ रहेगा तो ही HIV आया रहेगा. ये ट्रांसजेंडर है, सेक्स वर्क किया रहेगा. ये लड़की है, इसका अटायर ऐसा दिख रहा है, मतलब ऐसा कपड़ा पहन के आया है इसने, मतलब she's a female sex worker. Judgmental behavior. A counselor has to be non-judgmental. He and she has no option than being a non-judgmental person. Result of negative and non-reactive. जो रिजल्ट आता है रिएक्टिव और नेगेटिव का, वो a negative or non-reactive result to the HIV test means that test has not detected presence of HIV in blood, in body. चलो blood का ही टेस्ट होता है, but we are taking as a body. A negative and non-reactive result to the HIV test means the test has not detected. Okay. Negative जब आता है, obviously negative मतलब. हाँ. In case there was suspected risk exposure, मतलब unsafe sex हो गया और needle sharing हो गया recently, it can be considered that there is no infection. I told you, right? Window period. Right. This is a case on them. In case there was probably risky exposure, unsafe sex or unsafe needle use, there is a probability of window period and a repeat test after 3 months can be required. Okay. Once it is ensured that no HIV infection is present, it is important to understand modes of transmission and make behavioral changes to avoid the risk.
as mentioned in previous slides. Hmm. You know, एक बार हमको मालूम पड़ गया कि हमारे बॉडी में HIV इन्फेक्शन नहीं है, it's very important to know what are the modes of transmission. Right. You know, very important. I told you, right, pre-exposure, pre-testing counseling and post-testing counseling. They explain in post-testing counseling, they explain the modes of transmission, what is the prevention, you know, if what is treatment, if something happens this way, where you can avail things. All those things are done there. Result positive or reactive. इसका मतलब क्या है? A HIV positive or reactive test means HIV infection is detected. Getting diagnosed of HIV infection can be overwhelming and life-changing event. एक अचानक से आज मैं टेस्टिंग किया और फिर उसके बाद मुझे मालूम पड़ा अरे आई एम पॉजिटिव. The whole thing, your whole diet gets changed. Your whole life gets changed. You know why? Because you know people can feel many emotions, sadness, hopelessness, and even anger. यार नहीं मेरे साथ ऐसा, अगर मैं ऐसे क्यों किया और ये कहाँ से आया, या फिर ये मेरे को ही क्यों होना था, ये सब क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चलने लगे. Counselor at testing site have the required information that can help to work through the early stages of diagnosis and begin to manage your HIV. Okay. Talking to others who have HIV may also be helpful. You know, that is why in some facilities in India have peer counselors. They are in majority of the in ART and ICTC centers, we have peer staff. You know, peer counselor, peer you know counselor hai, peer navigator hai, and then peer we have staff nurse is also peer there. So it's that. Once diagnosed positive, the immediate next step should be is to get linked to ART treatment facility and start treatment for HIV. जैसे ही आपको पता चलता है आप HIV पॉजिटिव हो, डायग्नोस हो पॉजिटिव से, सबसे पहला काम आपको दवाई शुरू करना है. सबसे पहला काम. You don't have to think anything कि मैं आयुर्वेदिक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं इसके पास चल जाऊंगा तो ठीक कर देगा. No. You have to visit your facility at the ART center and start your medicine. Okay. Treatment for HIV. अब ट्रीटमेंट क्या है HIV का, मतलब कैसे मैं ट्रीट करूँ इस HIV को. Okay. HIV treatment involves taking medicine that reduces the amount of HIV in your body. Okay. HIV medicine is called antiretroviral therapy. I told you, right? HIV का जो मेडिसिन उसका नाम है antiretroviral therapy or treatment. ART does not eliminate HIV from body. It can control it. Okay. HIV का जो वायरस है बॉडी में जो घूम रहा है सब जगह पे मेरे, वो उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता, वो उसको कंट्रोल कर सकता है. अगर मेरे बॉडी में वायरल लोड टेस्ट एक टेस्ट है जहाँ पे मुझे मालूम पड़ता है कि मेरे बॉडी के अंदर कितने वायरस हैं, कितनी कॉपीज है वायरस के. ओके. वो अगर 10 हैं तो 10 से 1 हो सकता है पर 0 नहीं हो सकता. अगर 10,000 है, 10,000 से 10 हो सकते हैं बट 0 नहीं हो सकते. ओके. ART need to be taken lifelong. Once ART is started, you have to take it lifelong. You don't have to stop anywhere, whenever you want, whenever you know. You have to take it lifelong. Okay. If taken regularly, most people can get virus under control within 6 months. Okay. Yes. If you are taking medicine on time, regular on the same time, there is a chances where तुम्हारे बॉडी में जो वायरस है एकदम 0 पे आ जाए. Not 0 in the sense 1, I mean to say. Where your whole virus, where the virus in your body is inactive. Only one virus will be active, and that does not affect your body more. Okay. When it multiplies, increases in your body, then it harms to your immunity system, CD4 cell.
Though there is no effective cure for HIV, people who take ART regular, lifelong and healthy live lifelong and healthy life. भले इसका इलाज नहीं है HIV का, बट लोग जो दवाई ले रहे हैं ART 20 साल से 21 साल से लोग दवाई खा रहे हैं HIV की, वो आज तक जी रहे हैं, आज तक जी रहे हैं. They are the leaders of our country. There are many people अच्छा, who are taking medicine on time. उनको पता नहीं चलता है. हाँ. ओके, इंटरेस्टिंग. Before starting ART, a doctor or healthcare worker will ensure following: कि आपका counselling हुआ हो, to provide all the relevant information on ART and prepare person for lifelong treatment. ओके. काउंसलिंग के टाइम पे उसको पता होना चाहिए. ट्रीटमेंट लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं कौन सा दवाई खा रहा हूँ और मुझे कब तक खाना है और कब कब खाना है. ये काउंसलर बताएगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जानने के लिए. ठीक है. मेडिकल एग्जामिनेशन टू रूल आउट और डायग्नोज एनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलोसिस or comorbidity like diabetes, hypertension, etc. or any other issues. Okay. ART दवाई शुरू होने से पहले हमारी बॉडी का पूरा पहले चेकअप होता है कि जो हम लोग दवाई देंगे वो इस बॉडी के अफेक्ट करेगा कि नहीं. इसका अगर एक लीवर या एक किडनी अगर बहुत नाजुक है, हमको दवाई चेंज करना पड़ सकता है ART का. इट्स नॉट दैट कि इसको HIV होगा ये ले दवाई. नो, उसका पूरा बॉडी का एग्जामिन होगा, how his body reacts, how his body is strong, weak, healthy, how it is. We have to examine that so that we can diagnose any opportunity infection. अगर उसको ट्यूबरक्यूलोसिस है तो हम लोग पहले HIV का दवाई शुरू नहीं करेंगे. पहले हम लोग HIV का दवाई शुरू नहीं करेंगे, पहले ट्यूबरक्यूलोसिस का दवाई शुरू करेंगे, फिर उसके बाद HIV का. क्योंकि एक साथ इतनी हाई डोज दवाई एक ह्यूमन में हम लोग नहीं ट्रीट कर सकते. तो पहले हम लोग ट्यूबरक्यूलोसिस का 1 महीना या 1.5 महीना या 15 दिन का दवाई शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 15 दिन बाद ART स्टार्ट होगा. लेबोरेटरी एग्जामिनेशन टू एस्टैब्लिश हेल्थ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लिवर, किडनी, ब्लड एंड अ सर्टेन बेसलाइन इम्यूनिटी थ्रू CD4 काउंट. ये हर 6 महीने में करना बहुत जरूरी है. ये ART शुरू करने से पहले हमको ये जो सब टेस्ट है इन सब के करना बहुत जरूरी है. Before starting your ART also and after you have started your ART also, after every 6 months you have to test your body, how it's reacting, how it's doing, that medicine is affecting your body or not, all of those things. Okay. ART initiation is not important. Side effects: nausea, lifestyle I should say. Those things were not important because that is after HIV is diagnosed and that treatment is there. पर बता सकते हैं ना क्या होता है कि नहीं बता? थोड़ा पीछे जाओ, मुझे से थोड़ा देखना था. हाँ, ये वाला ठीक है. या आगे वाला. हाँ. Side effects: nausea, vomiting, diarrhea, difficulty sleeping, dry mouth, headache, rash, dizziness, fatigue, and this is after the medication, right? Not for everybody, but some common side effects. Depends upon person to person's health. Right, of course. And medicine reactions. ऐसा हो नहीं सकता ना करके कुछ मेडिसिन ले रहे हो और बॉडी पे इफेक्ट हो. तो हमको हर चीज पे, तुम्हें कोल्ड मेडिसिन भी लेते हो, तुम्हारा कोल्ड बेटर होता है, पर अदर भी यू फील लाइक नॉट सो ग्रेट. सो ऑब्वियसली इतना तो होगा ही. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड क्या था? Next slide है adherence. Most that you told in the beginning, and taking suggested helps, and the amount of वो क्या था? Amount of ये क्या some people may find it एक minute. Regularly forgetting pills, treatment, fatigue. Okay, other reasons. Okay. Got it. Viral load and CD4. मैं इसको इसका मीनिंग बता देता हूँ. वायरल लोड है ना, मैंने आपको बताया ना, हमारे बॉडी में कितने HIV है, वायरस है, कितने HIV वायरस है, वो मुझे हर 6 महीने में ना जानना है. मेरे बॉडी में जो मैं दवाई खा रहा हूँ वो उसका इफेक्ट हो रहा है कि नहीं मेरे बॉडी में.
उसका इफेक्ट होना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए मुझे ना वायरल लोड और CD4 टेस्ट हर 6-6 महीने में करना बहुत जरूरी है। वायरल लोड हमको बताता है हमारे बॉडी में कितने वायरस है। अगर वो वायरल लोड कम हो रहा है, इट मीन्स मेडिसिन इज वर्किंग प्रॉपरली एंड द पर्सन इज adhering that medicine, taking that medicine on time every day. Okay. The viral load is decreasing, but whereas CD4 cell is decreasing, it can cause a problem to us. CD4 cells should always increase. अच्छा. Should always increase. तो viral load कभी भी डाउन होना चाहिए, less than 1000, and CD4 should be more than 200. Okay. Yes. Some people may find it difficult to continue treatment regularly due to side effects, forgetting pills, treatment fatigue, and other reasons. In such situation, talking to counselor and knowing tips and tricks to maintain adherence can work life. Right. Like, कैसे ये कर सकते हैं हम लोग? Taking to people who have faced and overcome with these issues. Support group, basically. Support group, yes. Support groups, group, peer counselors. In support group only we have peer counselors. Using reminders, alarm on phone, watches, ये सब हमको adherence के लिए मदद करती हैं. Making calendars, right. Using online apps for tracking health. Okay, using online app for in India, we have 2 applications which helps you to adhere your medicines, which reminds you. Okay. आजकल के इतना डेली लाइफ में लोग सबसे ज्यादा पहले व्हाट्सएप चेक करते हैं. राइट. सवेरे में जैसे उठूंगा वैसे मैं पहले व्हाट्सएप चेक करूंगा, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, है ना. तो वो करने से अच्छा है एक एप्लीकेशन डाल दो, आपको रिमाइंडर आता रहेगा. राइट. लाइफस्टाइल. अभी लोग बोलते हैं कि अगर HIV मुझे हो गया तो मैं तीखा खाना बंद कर दूं, खाना बंद कर दूं, फीका खाना शुरू कर दूं. नहीं, इट्स नॉट दैट. आप HIV से जी रहे हो, बट यू कैन ईट द सेम थिंग व्हाट यू हैव बीन ईटिंग फ्रॉम सो मेनी डेज. There should not be any changes, but there should be some changes like healthy eating, regular exercising, and avoiding habits like smoking. Other benefits that can help to maintain good physical and mental health. Yeah. Healthy eating comprises of taking a balanced diet, which should comprise of locally available food materials. Right. The diet should be high on nutrients like protein and carbohydrates, while consumption of lipid should be limited. This is liquid. Okay. Sorry. Okay. Counselor can help in preparing a balanced diet chart. Okay. But usually it's not required. It's that only important thing that you should regularly exercise and eat good food, home-based food. Bas. People with HIV can do the same type of exercise as people who don't have HIV. Prepare an enjoyable fitness routine and follow it regularly. ऐसा नहीं है कि मुझे HIV है तो मेरे लिए कोई अलग से एक्सरसाइज होगा, मेरे लिए सूर्य नमस्कार नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. Okay. सब कर सकते हो भाई, आप सब कर सकते हो. इट्स जस्ट योर वायरस. एक वायरस है जो आपके बॉडी में है. अदरवाइज यू आर एन ह्यूमन एंड वी आर आल्सो एन ह्यूमन विद द सेम फीलिंग्स एंड इमोशंस. Right. And right. Okay. So here we are finished our session slides. If you have any questions, ये end कर दो share screen तो. Okay. हाँ. So किसी का एक question आया था कि can people get HIV and STD through oral sex? Of course. You cannot get HIV through oral sex, but you can get STD. Okay, which right. is sexually transmitted disease. Right. So STD होने के बाद HIV हो सकता है? हाँ. Okay. बहुत कम चांसेस है STD से HIV हो जाए, लेकिन वो बहुत टाइम लगता है उसको होने के लिए कन्वर्ट होने. और जो अच्छा, ओरल सेक्स से है HIV होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. कम है बट है.
Okay, so obviously, like you said, the sperm count, the blood, anything हाँ, while you're doing oral sex, कुछ भी हो सकता है, right? yes, 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 yes. Needle prick होके अगर से ट्रांसमिट हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम्म, And what are the chances जिसको HIV हुआ है, ठीक है? Let's say out of 100% कितने सारे हैं जो AIDS में ट्रांसफॉर्म होते हैं? Okay. Earlier, this used to happen, there were lack of awareness. Okay, education नहीं था लोगों के पास, और उनके पास नहीं था, तो उन लोग ना दवाई लेते नहीं थे. ऐसा नहीं कि दवाई, there are many consequences. I will explain you that is if suppose female sex worker. Okay, female sex worker का जो काम है वो रात के समय पे ही होता है. वो रात के समय पे रात भर अगर वो काम करेगी तो वो सुबह के दिन सोएगी. टेंडेंसी, अगर हम लोग रात भर पार्टी करेंगे तो सुबह सोएंगे. तो वैसे ही क्या होता था कि ये जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, इन लोग जब HIV डायग्नोस होने के बाद भी दवाई नहीं लेते थे. लेना है उनको, लेकिन क्या करें, रात को इन लोग काम करते हैं, सवेरे इन लोग सोते हैं, इसकी वजह से वो ART जा नहीं पाते दवाई लेने. तो कंसिस्टेंसी नहीं है, आप ये कहना? कंसिस्टेंसी नहीं है, अडेयरेंस प्रॉपर नहीं है, तो दैट इज लीडिंग टू एड्स. अच्छा, पहले हाँ हाँ, तो जैसे मेरे पास जो क्लाइंट थे तो उनको 2 कॉन्डम यूज करने की वजह से, कॉन्डम ऑब्वियसली 2 कॉन्डम यूज यू नहीं शुड नेवर यूज डबल कॉन्डम. यू शुड नेवर. क्या होता है, अगर हम लोग एक कॉन्डम यूज कर रहे हैं और एक और डबल कॉन्डम उस पर यूज कर रहे हैं, तो व्हाइल हैविंग सेक्स द फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन की वजह से वो फट जाता है कॉन्डम. तो come on, use one good branded condom, or government is giving condom for free of cost. Use that and use lubricant of water वाला जो होता है वो यूज करो, कुछ नहीं होगा. पर अब जैसे छोटे बच्चों को हो जाता है, छोटे बच्चे मतलब डजंट मीन 10 साल के, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं आई एम 50, सो मैं सबको छोटा ही सोचती हूँ. तो जैसे 20 हुआ है एंड ऑल दैट, और उनको होता है, पर उनको सारा टाइम अपने पेरेंट्स का स्ट्रेस लगा रहता है, दे कैन नॉट शेयर इट विद देयर पेरेंट्स. तो ऐसे हाल में आपने तो बोला कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो कोई तरीका नहीं है कि बिना, लाइक टेस्ट तो कराना है मालूम है, पर उसके बाद you don't have to go so many times, is it possible? Okay, so now कैसा हो रहा है इंटरनेशनली, इंडिया का नहीं है अभी, इंटरनेशनली है ना, अभी ये HIV का क्योर थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कुछ चीजें आ रही है, एडवांस हो रही है उनके मेडिकेशंस. तो अभी ऐसा हो रहा है कि रेगुलर बेसिस पे लोग है ना दवाई खाते थे सेम डेट पे सेम टाइम पे, वो बहुत ही कभी कभी है ना मुश्किल हो जाता है. आज हमको मालूम है आज हम फ्री है, संडे हम फ्री, बट टुडे टुमारो आई एम गोइंग इन पार्टी, तो टाइम चेंज हो रहा है, लेट हो रहा है, नहीं खा रहा हूँ. तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिसका एंड्योरेंस प्रॉपर नहीं था. तो अभी यूके में देयर इज वन इंजेक्शन जिसमें है ना हम लोग वो दवाई के फॉर्म पे है, वो दवाई हम लोग जैसे इंजेक्ट करते हैं तो हमको 3 महीने तक दवाई लेने की जरूरत नहीं. ओह अच्छा, द न्यू वन. तो अभी इंडिया में कब आएगा ऐसा? इंडिया में पता नहीं, लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, the article. So this is, it will take time. And there is one more thing, if you are consistent to ART center, अगर आप रोज रोज अगर ART center आ रहे हो, अच्छा दवाई ले रहे हो, और आपका काउंसलर जो है वहाँ पे बैठा हुआ बंदा बोल रहा है हाँ he is very consistent, taking medicine on time, every day, every month he is visiting us, तो there is called multi-month drug dispensation, DMM. उसमें क्या होता है कि एक बार जब मैं ART फैसिलिटी अगर विजिट किया ना, तो 3 महीने का दवाई मुझे एक साथ मिल सकता है. अच्छा, लाइक दैट. ओके. हाँ, बट इन दैट केस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. राइट. यस. और मैंने सुना है कि ओनली when you get your blood tested and only at certain particular amount of whatever the cells, only then you have to take medication, ki once you're declared positive you have to take medication. No. If you are positive, it means you have a HIV virus in your body. If So you have to take not having HIV virus in your body, then it will automatically reflect as negative. As I said in my previous, it's a rumor, हाँ, ये rumor बहुत है इंडिया में, बहुत है. हाँ, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था ऐसा, नहीं. लेने की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा. हम लोग देखा जाएगा और तब तक it will become worse, फिर क्या करोगे? Yes. You have to counsel him. If you need any help, then let me know. Right. I'll give him your contact. So किसी ने लिखा है, is STD deadly disease? As much as I know कि not all STDs, there are some curable types which is syphilis,
chlamydia and some other. I think This HIV is nothing is but not. STD only. It's nothing but STD only, but the name is changed and the place is changed. Right. Okay. I think hepatitis. But I think STD is deadly. If you are not taking medicine, it's deadly. Exactly. And तो बच्चा लोग please जरा ध्यान रखो अपना. Okay, stop thinking that you have many lives and you are going to just have sex with whoever the fuck you want, and you will do these cocaine injections and all of it. क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो आप लोग? और प्लीज अगर से चलो तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद भी की, दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करो. अगर से आपको HIV हो गया है या कुछ भी ऐसा हुआ है, प्लीज मेक श्योर कि आप उन किसी का लाइफ बर्बाद मत करो. उनको प्लीज बताओ कि hey listen, I have got this and it's better that you stay away. But जैसे इन्होंने कहा कि it's not about staying away. No, it's not about staying away. Just clear. If you are comfortable disclosing your status, you can just say, see, I am HIV positive. Okay, let's have sex in a proper manner, in a protected sex. Use condom. Right. But generally, I don't know. I think that people are very selfish क्योंकि उनको पता है कि they will be judged. Suppose कोई भी HIV इंसान हो, हम जनरल पब्लिक तो 10 बार सोचेंगे, राइट? इतना प्यार थोड़ी हमको होगा किसी से कि हम अपना लाइफ रिस्क पे डालेंगे कि हमको कहीं HIV ना हो जाए, हमको जिंदगी भर मेडिसिन ना लेना पड़े. तो अगर से आप लोगों ने अपनी लाइफ के साथ रिस्क लिया है, then learn to live with the decisions that you have taken. Do not ruin somebody else's life. Be honest about it and give that person a chance to understand कि ठीक है, अगर से हम कॉन्डम यूज करते हैं, अगर से आपका वायरल लोड कम हो गया है, आप कंसिस्टेंटली मेडिसिन ले रहे हो, तो फिर आप शायद रिलेशनशिप में जाना चाहिए. और आई थिंक 2 HIV लोग तो फिर ठीक है, बट अगर से एक HIV पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, प्लीज डू नॉट. अच्छा यार, ये भी एक प्रॉब्लम है कि 2 HIV वाले लोग जो होते हैं वहां पे भी एक प्रॉब्लम है. अगर मेरी बॉडी में अगर वायरल लोड ज्यादा है, आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन ऑन टाइम, आई एम मिसिंग आउट माय पिल्स, तो क्या होता है उससे मेरे बॉडी में जो वायरल लोड है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इंक्रीजिंग रैपिडली. Okay, but whereas my friend, my partner, my girlfriend or my boyfriend, whoever it is taking medicine on time and his viral load is very less. It's compared to 0, 1, 2, 3 copies are there. He's living very healthy life. यहाँ पे क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से जो मेरे अंदर का जो वायरस है can transmit to his body. Oh, even if the person is taking on time and all that. Yes, this is very risky thing. Even we are, we have a one group here in India where we help people who are living with HIV, help them to get married. In that case, we test their viral load, whether it's same, they're consistent, they're taking medicine on time. Because it should not happen that if I'm dying, then I should drag him also to the. It should not happen that. So it's very important that if he's also taking medicine on time, you should also take that on time. किसी ने लिखा है, can we buy HIV medicine from drug stores, medicine stores या जो भी इंडिया में pharmacies जो होते हैं? Without prescription नहीं ले सकता. नहीं ले सकता. तो ये prescription कौन लिखता है? कौन करता है ये prescription? याती डॉक्टर. डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ेगा. बट ये जो दवाइयाँ हैं वो सब है ना आपको अवेलेबल होंगी. ये टाटा का मेडिसिन है, ये सब इट्स वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन. दिस ऑल 5,000 6,000 का मेडिसिन है 1 मंथ का. क्या कितना? 6,000 रुपीस का मेडिसिन है 28 डेज का. अगर से तुम प्राइवेट के पास जाओगे तो डॉक्टर, तुम गवर्नमेंट के पास जाओगे तो फ्री है. वाओ, ओके. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग पीपल, भाई मेरे पास आओ, फ्री में दवाई लेके जाओ. अच्छा, आपका लिंक मैं जरूर डालूंगी आपको. अगर से डीएम्स आएंगे, आई वांट यू टू हेल्प पीपल. Achha, so which part of India are you practicing like? Okay, so my organization is a national organization. They work in whole India, but my part is Delhi, Punjab, Haryana, Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Chandigarh. Chandigarh is Chandigarh also you can take it. Okay. I can help out in Chandigarh because Punjab is my area only, so it's part of Chandigarh Union Territory. बट अगर से आपके पास आया, सपोज कोई बॉम्बे में बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ, मदद कर और इजी.
बॉम्बे तो मैं नहीं, AIT में काम किया फील्ड लेवल पे। अच्छा, ओके ओके, मिल दैट्स जाएगा। ओके। वाओ, सो मच टू लर्न। एंड और ये मेडिसिन जो गवर्नमेंट फ्री देती है, उसके लिए हमको ज्यादा लाइक सपोज कोई पैकेजिंग दिखाना नहीं है, अगर से हम छुपाना चाहते हैं तो क्या, अगर से उस स्ट्रिप में होता है, कैसे होता है ये बॉटल मेडिसिन में के होता है इतना, मतलब 28 डेज का पिल्स ना, इतना मोटा में? पिल्स होता है। बॉटल में होता है, बॉटल में होता है। मोटा पिल होता है? हाँ, कितना, इतना सा? इतना सा होता है। हाँ, इट इज समवेयर अराउंड 1500 mg। ओह वाओ, ओके। ओके, सो बेसिकली कुछ लिखा नहीं होता बाहर ऐसे, लिखा होता है, यू कैन रिमूव दैट पैकेज। रिमूव करके रखो। और जितना ट्रस्ट करो अपने पेरेंट्स को, आई गेस, और क्या बोल सकते हैं आप लोगों को, यू नो, डोंट गो थ्रू इट अलोन। I always give this suggestion to each and every young population who are living with HIV in India. कि whenever you are diagnosed with HIV, don't get afraid of it. Don't get scared of it. Just you have to take care of yourself and then inform one person of your whether it's your friend, your girlfriend, your parents, anyone. But there should be one person who should know about your status. राइट राइट राइट। अभी आदित्य, तुम्हारा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर किया। एसटीडी इज अ डेडली डिजीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसटीडी होते हैं, कुछ होते हैं ठीक हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। अगर से तुम स्पेसिफिकली एचआईवी की बात कर रहे हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी ओनली मैनेज्ड। And now he was just saying that there's a new injection which has come in UK, which if you take for 3 months you don't have to take, but अभी तक इंडिया में नहीं आया है। In India, it's not even introduced in whole global. It is just a research. It's just a research. Yes, yes. Okay. And thank you so much, Aman. That was like really interesting. And I'm going to put your Insta tag. So in case आप में से किसी को भी और कोई क्वेश्चंस है, या आप लोग तकलीफ में हो, आप लोगों को मदद चाहिए, प्लीज डोंट हाइड इट। लाइक ही सेड, एटलीस्ट वन पर्सन ट्रस्ट एंड नॉट योर बच्चा फ्रेंड्स। वो लोग आपके लिए वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, किसी अडल्ट को ट्रस्ट करो। और जितना जल्दी मेडिसिन लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आई नो कुछ लोग बोलते हैं देखा जाएगा, अभी तक कुछ नहीं, पर हाउ डू यू नो, मे बी इट विल टर्न इनटू एड्स। व्हाई डू यू वांट टू टेक अ रिस्क, right? HIV can turn into the worst case scenario into AIDS only, right? Yes. Wow, okay. Anyway, thank you so much, Aman. Really appreciate So it. much for inviting me, Rachna ma'am. Thank you so Very much. enlightening, very enlightening. I'm sure कि बहुत बच्चों को काम में आएगा। और सब लोग नीडल्स शेयर मत करो, ड्रग्स ही मत करो मेरे हिसाब से, पर चलो ठीक है, नीडल्स तो शेयर मत करो। एंड जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, मेक श्योर दैट दे ओपन द पैकेट इन फ्रंट ऑफ यू। मेनी टाइम्स रीयूज करते हैं जो चीपर, जहां उनको पैसे बचाने होते, तो हमेशा चेक करो तुम्हारा ब्लड टेस्ट के पहले या कोई भी इंजेक्शन लेने के पहले, दैट दे ओपन द न्यू पैकेज इन फ्रंट ऑफ यू। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एवरीबडी ईट अ हेल्दी डाइट। डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल हु गेट HIV। उनका लाइक ठीक है, अगर से आप ड्रग्स कर रहे हो और ऐसे प्रोमिस्क्यूअस लाइफ जी रहे हो और रेड लाइट एरियाज विजिट कर रहे हो एंड ऑल ऑफ इट, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितना तुम रिस्की लाइफ जियोगे उतना रिस्क आप पे भी आएगा और आपके फैमिली पे भी आएगा। सो जस्ट बी केयरफुल, ईट अ हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज जरूर करना, ट्राई नॉट टू बी जजमेंटल इफ समवन इज गॉट HIV। मे भी उनको अपनी गलतियों को सुधारने का हमें मौका देना चाहिए, और सो दैट तुम थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करो। लोग वैसे ही इतने दुविधा वाले सिचुएशन से गुजर रहे हैं। और even if it's not you, please share this video with other children so that we reduce the number of HIV cases in India. Aman, before you leave, would you like to say anything specific to the audience? So my every time whenever I'm live, I say sex is good, but practice safe. Okay. That's all. Okay. Thank you so much, Aman. Appreciate Thank you it. so much, ma'am. Thank you so much. See you again. Hope to see you one more live with you. Thank Okay. you. Yeah. Thank Bye. you. Thank you. Bye. कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आए स्लेजर तुम? अच्छा, तुम लोग बाकी सब लोग ठीक हो? आज मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैंने 2 टैबलेट्स लिए फिर भी मेरा सर दुख रहा है। कुछ है तो पूछ लो, नहीं तो मैं चली। हम तो चले परदेस भैया, हम तो परदेसी हो गए, टाइप्स वाला गाना। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल इंग्लिश क्लास है, आ जाना जिनको इंग्लिश सीखनी है। I don't know, on the beam maybe I'll do it the week after. I'm not very sure if I'm going to continue that, although some people wrote to me कि please ma'am continue करो।
तो we'll see how that one goes. Okay. और कुछ कितने लोग देख रहे हैं? कोई लोग किसी को कुछ पूछना है अभी पूछो before I leave. I'm glad, Aditya, that you found the session amazing. Hi, Slazer, how are you? Do you want to say anything? I don't know. You can't hear anything. Even you can't hear anything. I don't know why you can't hear anything. Ma'am, ma'am, no question. हाँ, okay. I don't know why you can't hear. Anyway, podcast खत्म हो गया. तुम जाके YouTube पे देख लो. बाकी लोग could hear. So must be your signal or some issue. Otherwise, मैम आपको Instagram पे मैसेज किया है. हाँ, बहुत पता नहीं क्या हो गया था. जब मैं कल इंस्टा लाइव गई, लिटरली 25 मैसेज टक टक करके आए. मैं टाइम ही नहीं मिला है मुझे. बहुत कम लोगों को मैंने रिप्लाई किया. आई विल रिप्लाई टू यू ऑल. ठीक है, अपना ध्यान रखो. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय. सी यू.